Hello, good morning. Hello students. Welcome to S2S classes. आज हम क्लास 10th के लिए ये 9th लेक्चर बना रहे हैं, शाम तक अपलोड हो जाएगा। इसमें थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हमने पिछला जो आपका 8th लेक्चर था उसमें ग्राफ डिस्कस किया। ओके, हाउ कैन ड्रॉ द ग्राफ, हाउ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली, एंड स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, which type of relation in the two quantity that discussed in that. Now after that continuously we are going forward, and we have discussed that also what is the conditions, what is the relation between their coefficients if the two equations having linear equations, pair of linear. So it means a1x plus b1y plus c1 equal 0, first equation. Second, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These is general equation, standard linear equations, general equation, general form. a1 b1 c1 any real number, a2 b2 c2 are any real number. These are the coefficients of x variable, y variable and the constant term respectively. Okay, so we understood that if system is consistent, solution is there. We understand by the condition. We have done this in lecture 8. Before this lecture you can see in that every table, relations, ग्राफ किसका, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है, क्या ग्राफ आएगा, किस कंडीशंस पर, कोफिशिएंट्स में आपस में रिलेशन है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. वी आर फाइंडिंग दीज रेशोज, एंड इन दीज रेशोज रिलेशंस आर देयर. अकॉर्डिंग टू रिलेशंस वी आर डिसाइडिंग विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ कि ग्राफ विच टाइप ऑफ विल कम. This I told in lecture 8. You can see in lecture 8 if any students not seen. Okay, so again watch the chapter 8 for that. Now continuously forward, there are two ways of solving. One is graphically, other is algebraically. Graphically only possible if solution is in इंटीजर्स फॉर्म. सॉल्यूशन इज इन इंटीजर्स फॉर्म. कन्वीनियंटली, सुविधाजनक सॉल्यूशन उससे भी आ जाता है ग्राफिकली से. इफ़ इंटीजर्स आर नॉट द सॉल्यूशन, यानी एक्स वाई की वैल्यू इंटीजर्स के अलावा कोई और नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर है सॉल्यूशन एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो डिफ़िकल्ट बाय द ग्राफिकली, बिकॉज ग्राफ से रीडिंग करना मुश्किल है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो कहीं इंटीजर्स पर रीडिंग नहीं आ रही है, बीच में आ रही है. मैनी रियल नंबर्स आर देयर इन द बिटवीन टू इंटीजर. तो कोई एक्स और वाई की वैल्यू एग्जैक्ट इंटीजर्स आ रही है, देन इजी टू रीड बाय द ग्राफ, अदरवाइज नॉट. सो सेकेंड मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एवरी टाइप्स ऑफ pair of linear equation in two variable to get the solution that may be integer form, may be that in rational number form, or may be irrational number form values of x and y. So solution of the pair of linear equations in two variables always having the two equations in the quantities x and y. One is the independent quantity, that is x, dependent quantity is y. So two relations are there, two equations are there, and we are solving by the algebraically method. Algebraically method is having two method. Algebraically way having two method. One method is substitution method.
two method it has. First, substitution method. Substitution second is elimination. Eliminate करना, delete करना one variable. Elimination. Elimination methods. These are two methods to solve in the algebraically way. One is the substitution, other is elimination. Now, what is the substitution method? First method, substitution method. Substitution method is saying to us, ये word ही हमें clear कर रहा, substitute. Substitute का meaning किसी एक थिंग का सब्सटीट्यूट, कोई दूसरा जो उसका काम कर दे, सब्सटीट्यूट दूसरे के वे में वो काम हो जाए. तो सब्सटीट्यूशन का मतलब है, क्या मीनिंग है कि एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ले लेना. जैसे रिलेशन है कोई, 2x + y = 10. 2x + y = 10. If relation is this, so what is the value of x? 2x + y = 10. So what is the value of x in the term of y? Y take that side right hand, 10 - y. Shift plus y that side, then 2x = 10 - y, and then x = 10 - y divided by 2. So this is called the substitute value, substitution. So means one variable value take in other variable. Any you can take, x value in the y or y value in the x variable form we can take. This is called the substitution method, and put that value which you taken in the other equation. This value take from any one equation, anyone, and put in the other one. So by the example I am telling to you to understand better. This is okay, बस सब्सटीट्यूट कर दिया वन, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल में वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में उसके प्लेस पर उसको पुट कर दिया, उसके प्लेस पर दूसरे इक्वेशन में, तो वो फिर एक ही वेरिएबल में बन जाएगी दूसरी इक्वेशन भी, और वो दोनों एक ही वेरिएबल में होने से हम सॉल्व कर लेंगे इजीली. वी कैन सॉल्व इफ एनी इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो देन ओनली वेरिएबल टर्म simplify like term and constant term take other side, and then value will come of the one variable. Easy one variable equation we can solve. We have solved in 7th classes, 6 classes one variable equation. Okay, so simple. After that you can see now I am taking one example. Okay, take one example for the substitution method. One example, 3x plus 2y is equal to 12. 12, or we can take like that number which not divisible by 3, then 14. Okay, equation 1. Now equation 2, 5x, let us suppose 5x minus y is equal to 10. Let us suppose these are the two equations, first equation, second.
let us suppose these two equations pair of linear equation. Okay, now how can solve? By substitution method. I told now only take from any equation one variable value in the other variable form. Let us suppose I am taking value x, yani 3x one term this side, and 2 I take that right hand side because I want to take the value of x only. So 2y will go that side, then is equal to 14 minus 2y. शिफ्टिंग द टर्म इन द इक्वेशन, एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट होती है टर्म, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है. ओके, यू नो. आफ्टर दैट एक्स वैल्यू व्हाट विल कम? वी हैव टू फाइंड एक्स नाउ. देन डिवाइड बाय 3. 3 मल्टीप्लाई हियर, तो इट विल गो इन डिवाइड. देन 14 minus 2y divide by 3. So this is your substitution value of one variable in the term of other variable. So this we have to say this is that equation number 3. So put this value, substitute means put, substitute लेना यानी substitute x, substitute this value, this x in other equation, this taken from the first equation, to put in second, in substitute value x in equation second, easy, in equation second. तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये किसकी वैल्यू? x की. तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करो? 14 माइनस 2y अपॉन 3. कहाँ पर? वेयर? इन इक्वेशन 2 एट द प्लेस x. तो व्हाट इज इक्वेशन 2? 5x. तो x की वैल्यू व्हाट? 5 इंटू x. x वैल्यू 14 माइनस 2y अपॉन 3. 14 माइनस 2y upon 3. This value we put instead x के प्लेस पर, x के जगह पर, x के प्लेस पर. ओके, हमने क्या पुट कर दिया? x की जगह उसका सब्स्टिट्यूट, x का सब्स्टिट्यूट 14 माइनस 2y अपॉन 3 यहाँ पुट कर दिया. अब ये रोल करेगा उसका सब्स्टिट्यूट, तो x की वैल्यू यहाँ भर दी, माइनस y इज इक्वल टू 10. ओके, अब सिंप्लीफाई, ओनली सिंप्लीफाई इट. हाउ कैन सिंप्लीफाई? दिस इज वन टर्म, 5 मल्टीप्लाई इनसाइड न्यूमरेटर में, और y का कोई एल्शियम नहीं, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, तो डिनोमिनेटर लेंगे, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओके, एल्शियम कितना रहेगा? 3 and 1 का 3 एल्शियम, तो 3 इज इन डिनोमिनेटर एज इट इज, तो न्यूमरेटर विल कम एज इट इज. तो न्यूमरेटर व्हाट इज दैट? 5 इंटू 14 माइनस 2y. तो ब्रैकेट है, 5 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगी, 5 मल्टीप्लाई विद 14 एंड 5 मल्टीप्लाई विद माइनस 2y आल्सो. तो 14 5 70. ओके, आफ्टर दैट 5 2 10 माइनस 10y. ओके, फॉरवर्ड, डिनोमिनेटर 1, एल्शियम 3, तो 1 डिवाइड टू 3, 3 1 3 3, 3 मल्टीप्लाई इन y माइनस 3y. ओके, क्लियर? इज इक्वल टू 10. दिस डिनोमिनेटर 3 here this side. Okay,
denominator 3 full side, full equation left hand side, it will go in multiply right hand side, 3 into 10, 30, this will be 30, and here what will come? Simplify numerator, like term, minus 10y, minus 3y, both are like term, simplify, so minus 10 and minus 3, minus 13, so 70 minus 13y equal to 30. Then 13y here, 70 will go that side, so minus 13y is equal to 30, and here plus 70, it is plus 70 with this term, so it will go minus 70 plus term in minus, you know, shifting the term rule in the linear equation. Okay, so 30 minus 70, simplify, minus 40. ओके, दोनों ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लार्ज क्वांटिटी का साइन आ जाता है, माइनस 40. देन y इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज माइनस 13 मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में, दिस इज इन मल्टीप्लाई विद y, दिस इज इन मल्टीप्लाई विद y, तो इट विल गो इन डिवाइड, माइनस 13 विल गो इन डिवाइड, तो माइनस 40 अपॉन minus 13. Okay, then minus minus sign cancel, then this value is equal to 40 upon 13. So 40 upon 13 this. Okay, now after this we can put this value y in equation 3. Okay, we can put, we have to substitute this y now. Y value clear? Y value is 40 upon 13. So putting here in third, substitute this value. Substitute y is equal to 40 upon 13 in इक्वेशन, विच सब्सटीट्यूट हमने बनाया था उसमें, इन इक्वेशन 3, इसमें x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितना, 14 माइनस 2y, 14 माइनस 2y, y इज माइनस 2 इंटू y is 40 upon 13. Put here y, 2y, or whole divide by 3. Okay, numerator not having this LCM because minus in between, so LCM in the numerator. Okay, what is LCM numerator? 13 and 1, 13. Numerator 13 LCM, then 1 divide to 13, 13 into 14, 13 हो जा 52, 5 carry, 13 1 जा 13 plus 5, 18, multiplied and then minus, denominator 13, LCM 13, तो 1 into 2 into 40, 80, minus 80. Okay, now simplify or divide by 3. This whole divide by 3, 3 upon 1. See this, divide by 3. Now divide by 3 means multiply by 1 upon 3. 182 minus 80. तो 102, 182 minus 80, 102 upon 13, multiply and 1 upon 3. Okay, this is the value of x. Now simplify forward, then it is simplified by 3. We can simplify if any common factor in numerator and denominator, so we may cancel that common factor.
ओके, तो 3 कॉमन फैक्टर, जैसे 3 3 जा 9, 12, 3 4 जा 12, ओके, देन इट इज 34, 34 1 जा 34 अपॉन 13. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x and value of y, 40 upon 13. So like this if question, then by graphically it is not easy to get. Okay, if solution is integer form, x y value in integer, so that only problem can be solved graphically easily. Okay, रीडिंग प्रॉब्लम विल कम इन द ग्राफ. जब वैन यू विल रीड, तो वहाँ तो इंटीजर्स हैं, तो उसको कैसे रीड करेंगे जो इंटीजर्स के बीच में वैल्यू एग्जैक्ट, वी कांट रीड एग्जैक्टली. सो सेकेंड मेथड एल्जेब्रिकली इज इम्पोर्टेंट एंड द ब्रह्मास्त्र है लीनियर पेयर को सॉल्व करने के लिए, कोई भी होगा. ठीक है, अगर ग्राफिकली कहता है एग्ज़ाम में तो ग्राफ से ही करना होता है, ड्रॉ द ग्राफ. or I told in the last lecture graphically. Okay, now this is the answer we can write. X is equal to 34 upon 13, y is equal to 40 upon 13. Answer. Okay, solve this problem. So this is called the substitution method in the algebraical way. ये algebraical way है. Okay, algebra, solution, linear equation, shifting the term. Okay, I think you understood this substitution method. Now second method, elimination. What is elimination? Eliminate word also saying clearly to us, eliminate. Eliminate means delete, deleted. डिलीट करना, डिलीट मीन्स ओमिट, ओमिट मीन्स रिमूव्ड, रिमूव करना. एक वेरिएबल को डिलीट करना है, कोई सा भी एक, चाहे x चाहे y, इट इज़ योर चॉइस. एज इन दैट सब्सटीट्यूशन मेथड आल्सो योर चॉइस. टेक वैल्यू ऑफ x सब्सटीट्यूशन इन द y फॉर्म और टेक द सब्सटीट्यूट ऑफ द y in the x variable term and put in the other instead that and solve. Okay, now in the second method elimination, one example I am taking. eliminate करना है, कैसे करते हैं? now you understand that delete करना है one variable. how? now if example, one example I am taking, if 2x minus 5y is equal to 11 and 3x plus y is equal to 15. Okay, if these are the two equations in two variable, how can solve by the second method, elimination method? किस मेथड से? by second method, using second method, using elimination. Elimination method, second method, this one. Okay, elimination method. Okay, now how eliminate, how delete one variable, कैसे डिलीट करें? या तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट, बट इक्वल बनाने पड़ेंगे पहले. तो कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल. वन वेरिएबल एक्स, यू वांट द डिलीट एक्स वेरिएबल, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी सेम. हेयर 2 है, हेयर 3 है, तो दीज आर नॉट सेम. फर्स्ट वी हैव टू मेक equal the coefficient of one variable, any one, or you can make the equal coefficient of y. here minus, here 5 है, here 1 है. sign you have not see, you have to see the number only. Okay, coefficient.
तो यहाँ इक्वल नहीं है, ये यहाँ भी इक्वल नहीं है. इफ़ यू वांट टू मेक द इक्वल x, then here LCM of both will be the equal number. If two different numbers and you want to make the same number, then take always LCM, because on the LCM of two numbers both will be equal. both का मल्टीपल है वो, दोनों का मल्टीपल है वो, कॉमन मल्टीपल, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसीलिए बोलते हैं कि वो किन्हीं दो नंबर को सेम नंबर करना है तो उनके मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल है दोनों का वो एलसीएम होता है, और उसी को हम यूज करते हैं टू मेक द सेम नंबर. तो 2 and 3 सेम नंबर बनाने हैं तो एलसीएम ऑफ 2 and 3. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3? 6. देन मेक 6 दिस. तो नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1. लेट दिस इज 1 and this is 2. तो make 6. How? By multiplying 3 in equation 1 and by 2 in equation 2. So we have to say multiply, this is the method, multiply by 3 in equation 1 and by 2 in equation 2. तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई. ओके, इन फुल इक्वेशन. तो हाउ कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इन एनी इक्वेशन इन ईच टर्म, not only in this first term or multiply, no, because the balance will disturb. Balance, equation is a balance, तराजू है. तो एक काम सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ करना पड़ेगा वही काम. तो आप मल्टीप्लाई इन ईच, हर एक को बढ़ाना पड़ेगा उसी रेशो में. तो मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3. 3 2 जा 6, 6x, 3 5 जा 15 माइनस 15y एंड 11 3 जा 33. तो ये न्यू इक्वेशन 1 बन गई. और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 जा 6 and 2 into 1y, only 2y is equal to multiply by 2 in 15, then 30. Now these check x coefficient same 6x. So this is the deleting way to make the coefficient equal. Now both in plus sign, to subtract. If one negative, one positive, then add. Understand here one point. If which you made the equal coefficient if both are having the same sign means plus plus or minus minus, then subtract. If having the already different sign, one positive other negative, any one positive other negative, then by adding they will cancel. Okay, you know, okay, negative 5 and positive 5 add means cancel 0. Okay, इफ बोथ आर पॉजिटिव तो देन ऐड करके तो डबल हो जाएंगे. सब्ट्रैक्ट करना होगा और साइन चेंज, देन सेम साइन सब्ट्रैक्ट. तो वी हैव टू राइट हेयर सब्ट्रैक्ट. चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, देन change the sign of each term. If positive then negative, if negative then positive, but here positive all then negative. Then 6x minus 6x cancel out now, and minus 15y and minus 2y now. Change this plus as a minus. So minus 15 minus 2 minus 17y is equal 33 minus 30, then 3. Then y equal to, this implies
y is equal to minus 70 will go and divide, then 3 upon minus 17. Then this is the value of y. Like this, one delete and simplify, other variable will come. X deleted, then value y will come. If y deleted, value x will come first, and then put this value in any one equation. Put this value in any one equation in this method. So y value putting in first. I am substituting substitute y is equal to minus 3 upon 17, this in equation 1. इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वन इक्वेशन ले रहा हूँ, ये इसमें पुट कर रहा हूँ। This was equation 1. So putting in this, substituting, so forward what will come? 2 into x minus 5 into y. Y is minus 3 upon 17. Minus 3 upon 17. Okay? Y value put equal to 11. Substitute the value of y in equation 1. Now simplify. This number simplify, minus minus product, multiply, then multiply, negative sign with negative, positive will come, then 2x plus 5 3 ja 15 upon 17. Multiply in the fraction number, so multiply single digit in fraction, then in numerator multiply always. Okay, denominator as it is, you know that, is equal to 11. After that, simplify this. Okay, how? This number, this term, constant term will go constant side, then variable term 2x यहाँ रहेगा और ये constant term उधर जाएगा 11, और ये प्लस है तो माइनस 15 upon 17. Okay बेटा, and then denominator nothing, then subtract or add fraction number by taking the LCM. So 17 and 1 LCM 17, and then 1 divided to 17, so 17 into 11 7 ja 77, carry 7, 11 ja 11 and 7 18, and then 17 divided to 17, 1 into 15, only 15. Okay, 187 minus 15, then 2 will go in divide, subtract this, 7 minus 5 2, 7 में से 5, 8 minus 1 7 and 1, divide by 17, and this 2 in multiply it will go also in divide here 2. Simplify 2 से 2 8 ja 16, carry 1, remainder 1, 16 remainder 1, then 2 12, 2 6 ja 12. Okay, so it is 86 upon 17. It is not divisible, so this answer, so x value, answer is this, so answer x is equal to 86 upon 17, and y value is equal, what was the y? Minus 3 upon 17. Minus 3 upon 17. So these our answers, x and y. So solve by algebraic way
by substitution method, x value, y value. If any one problem, any one question you want to solve by both method, you can check, answer will be same. Okay, now understood. Thank you. Watch, like and share the maximum. How many your relatives, how many your friends, share to all that, they will share to that students. उनको अपने भाई बहन जो भी हैं उनको शेयर करें और सब रिश्तेदार में शेयर करें, जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठाएं और जो कहीं नहीं जा सकते वो घर बैठे उसको वॉच करें. थैंक यू. सब्सक्राइब ज़रूर करें. सब्सक्राइब द चैनल.